Hello, Assalamualaikum. Welcome back to Fahadkhan288 and today I'm going to react on a video 5G in US. I have many requests received for this video, especially many people request for this video. The video title is a day on a 5G phone fast. I have many requests from FB and Instagram, and today I'm going to react this video. Before starting video, please subscribe my YouTube channel and subscribe my vlog channel, link in an iCard and in the description. So subscribe and like the video. Ever since the whole 5G hype train kicked into gear, my friends at Android Central have said the same thing. You should not buy a 5G phone in 2019. Yeah. The networks aren't mature enough. The phone selection isn't broad enough. It's just too early. Well, I found a way to prove those folks wrong. Turns out there are actually a few people who should buy a 5G phone. The thing is, they all pretty much live in this building right here. Chicago, home of striking architecture, delicious cheesy popcorn, a disproportionate number of my old college friends, and one of only a handful of 5G networks in the USA. Samsung brought me out here to experience that network, along with some familiar faces, on this phone right here. The 5G version of the Samsung Galaxy S10 is bigger and heavier, fitter, happier, more productive, you name it. It packs a larger screen and more cameras than any other Samsung. It's also got the biggest battery, and for the first time in years, a faster charger. But while you'll see plenty of footage from this phone's cameras in this video, I'm really here to talk about the network, what using 5G for the first time felt like. In short, it's fast, and it's frustrating. Fast part first. Using a Galaxy S10 Plus on Verizon's 4G network alongside the 5G version here, well, of course, 5G is a lot faster. In my testing, the download difference was about 3 to 5 times faster on 5G. And since I know watching speed tests is about as fun as watching paint dry, here's a real-world example. You're about to get on a flight or go underground on the subway, and you forgot to download a game to pass the time until the last minute. Well, even with something as big as Asphalt 9 that weighs in at 1.7 gigabytes, it actually takes longer for the phone to install the game than it did to download it. Better example for someone like me who's always got headphones on, even if you crank up the quality to maximum on Spotify, a 5G connection can pull down an 81-song playlist in less than a minute. It's one thing for the manufacturers to promise you these kinds of speeds. It's another to hold a phone in your hand and watch how fast it is. Amazing 5G Samsung phone. Unfortunately, the same technology that makes it faster also makes for the frustrating part. See, 5G stands for 5th generation. It's not something simple like a software update to your phone. Actual 5G connections, ones fast enough to give you these speeds, require a whole new kind of network. It's easy to tell the difference. Where a regular 3G or 4G cell site is usually mounted on a big tower like this, a 5G node is small enough to fit on top of a light pole like this. Why? But the flip side is that there are going to have to be nodes like this everywhere in 5G cities. That's because they're operating at much higher frequencies. Let's illustrate what I mean using a piece of the Chicago skyline and say the Willis Tower is the radio frequency spectrum. The cell phone you use right now probably operates mainly around the 800 megahertz band, which would be almost at the bottom, around the second floor. Your Wi-Fi router at home, that broadcasts between 2.4 and 5 gigahertz, which would be up here between the 4th and 6th floor. Verizon's 5G uses the millimeter wave spectrum between 28 and 39 gigahertz. That's way up here at floor 103, which I visited on my trip, and a quick look down will reinforce just how very high up it is. Now, being up that high in the spectrum is what allows 5G to offer such fast speeds. But it also means those signals can't travel as far and can't penetrate obstacles as well.
During my day in Chicago, the difference between holding onto a 5G signal and losing it was literally the difference between walking 5 feet or putting a phone on the wrong ledge. Even ducking behind a tree or being on the other side of a window would sometimes cause the connection to fall back to 4G. Now, Sprint and T-Mobile are going with a different approach to 5G in a lower part of the spectrum, but look, it's possible to build a solid 5G network where Verizon is doing it. You just need a ton of infrastructure that they've barely started building. This explains why all of us media folks who've been invited to test it have kind of done the same things. Performed speed tests, downloaded big apps. It's not because we were required to. It's because the network isn't ready for much else. Like, the number one thing I wanted to try was a video live stream, or see how long it would take to upload a huge video to YouTube. But when I visited, the network wasn't even using 5G for uploads yet. The phone would fall back to 4G for those. I asked Verizon why it was selling 5G phones when the network was barely online. The company didn't give me a straight answer, but it's not hard to figure out. Just Google who was first to 5G and you'll see a few companies jockeying for that recognition. Yeah, it's a prestige thing and it's also a money thing. As Reuters points out, the entire industry is expected to generate over $12 trillion by 2035. That's $12 trillion per year. Per year. But we're in 2019. So if you buy a Galaxy S10 5G today, what are you getting for your almost $1,300? Well, much of the same stuff you get on the far cheaper Galaxy S10, which if you've watched my review, you'll know is hardly a bad thing. Don't forget those bonuses, like the bigger battery and display, the better charging brick, and the extra cameras. If you live in Chicago or Minneapolis right now, you'll also be able to try out 5G for no additional charge, since the company is waiving its $10 a month fee for now. Verizon's spin on this is that buying one of these, or an LG V50, is future-proofing yourself, since it plans to launch 5G in another 28 cities before the year is out, and if you live in one of those, well, your phone will already be ready. Look, Verizon's network has improved substantially, even in the weeks since that first wave of underwhelming coverage. And even if you've watched an hour of American TV in your life or seen one billboard, you know how zealously the company guards the reputation of its network. I have to believe it's going to deliver a quality 5G experience once that network is fully deployed. Until then, though, I have to say that my friends at Android Central are right. Unless you happen to live at a corner like West Grand and North Franklin in Chicago, there's still little reason to buy a 5G phone just yet. If you do buy one and you want to protect that mirror finish, folks, get a D brand. They're my sponsor, and they make the best vinyl skins in the business. From my usual favorites, Concrete and Swarm, to the flashier carbon fibers and dragons that might be a better fit for such a cutting-edge device. Hit the link in the description for those. And if you've used a 5G phone on any network, I want to hear your experience. Sound off down in the comments. Disclosure, Samsung flew some members of the media to Chicago for this test, including Mr. Mobile, and took us to the top of the Willis Tower and for a ride on the river to test the phone. Neither Samsung nor Verizon received editorial input or an early look at this video, though. They're seeing it at the same time you are. Please subscribe if that's the kind of tech coverage you value on your YouTube, and check out Pocket Now and Tim Schofield's videos of this same experience at their channels, linked below. Until next time, thanks for watching. And stay mobile, my friends. यार भाई क्या स्पीड थी यूएसए में। आपको पता है कि 5G लॉन्च हो गया पाकिस्तान में। 5G का भी कुछ नाम नहीं है। 5G पाकिस्तान में नामो निशान अभी तक नहीं है, बट 5G जोंग वालों ने कुछ टेस्टिंग स्पीड की थी कुछ महीने पहले की बात है। बट अगर पाकिस्तान में लॉन्च होना भी है तो कम से कम पहले तो मोबाइल फ़ोन आएंगे। जो मोबाइल फ़ोन अभी है वो ओनली सपोर्ट करते हैं 4G एंड 3G को। जब मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में आएंगे और सपोर्ट करेंगे तो कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। अगर 4 साल नहीं तो 2 साल तो लगेंगे। 2020 से 2021-22 के बीच में पाकिस्तान में 5G सिस्टम लॉन्च होगा, जो सर्विस है। एंड यूएसए यही तो बात है कि अंग्रेज़ हमसे आगे क्यों है। अंग्रेज़ इसी वजह से हमसे आगे है क्योंकि वो लोग सबसे पहले अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ देख लेते हैं, फिर हम लोगों को देते हैं वो चीज़। तो जब पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी तो वो काफ़ी टाइम मतलब
गुजर गया होगा। सो यही बात है कि हम लोगों को खुद कोशिश करना चाहिए इन चीज़ों में, एक्सपर्ट होना चाहिए कि यार वो जब 2019 में लॉन्च करना है, हमें भी इसी साल लॉन्च करना है। हम क्या करते हैं कि हम 3 साल 4 साल लगा लेते, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कंपनीज है नहीं जो 5G को लॉन्च करी, ओनली जो है ना जोंग वाले। एंड दूसरी बात, पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट अलाउड नहीं करेगी ये चीज़ करे, वो चीज़ 5G को लॉन्च करे, क्या ये मतलब ये मसला है 5G से। तो ये चीज़ें बहुत होती है, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है US है, तो उस वजह से वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं आती। पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई करेगा तो बहुत ज़्यादा इशू आती है, क्या करे क्या नहीं करे। बट ये अमेरिका में ऐसे इश्यूज़ नहीं है, USA कनाडा इन जगहों पे नहीं। बट अभी USA में 5G लॉन्च हो गया है, कुछ टाइम पहले की बात है, आई थिंक 6 मंथ बिफोर 6 मंथ। एंड आई थिंक 6 महीने पहले USA में जो है ना 5G लॉन्च हो गए, फ़ोन भी लॉन्च हो गए। S10 सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च हुआ है USA में। और आप उस फ़ोन के डिज़ाइन को देखे, इस क्वालिटी देखे, मच बेटर, बहुत ही अमेजिंग। एंड अगर ऐसे फ़ोन पाकिस्तान में इस फ़ोन को लिया जाए तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का तो ये फ़ोन होता है यार। कौन लेगा 2 से 2-2.5 लाख 3 लाख इतने का होता है। उसके बाद आईफोन आ जाते हैं। बट अगर इस फ़ोन की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोन था। एंड 5G कमिंग सून। एंड पाकिस्तान तो पाकिस्तान में 5G लॉन्च होगा तो पता नहीं कब होगा, 2025 होगा, 2020 होगा, 2022 होगा, उसके बारे में कुछ नहीं पता। बट हाँ इतना पता है कि 2000 जब भी लॉन्च होगा तो बहुत ही क्रेज़ होगा। अभी हम लोग अपने वाईफाई के राउटर पे बैठते हैं तो वाईफाई की स्पीड से थोड़ा 4G का स्पीड ज़्यादा होता है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पे। मैं काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ जोंग वालों का, एंड काफ़ी वीडियोस में अपने जोंग 4G से ही अपलोड कर चुका हूँ, जो बहुत ही स्पीड वाईफाई के थ्रू मतलब वाईफाई के से तेज़ होती है। सो ये थी एक वीडियो जो बहुत ही रिक्वेस्ट की जा रही थी, यार प्लीज़ रिएक्शन। मैंने बोला क्या है यार, वो तो एक टेक वीडियो थी, टेक वीडियो के ऊपर हम लोगों को रिएक्शन किया, पता नहीं क्या रिक्वेस्ट क्या रिस्पॉन्स आएगा ये नहीं पता। बट हाँ इतना पता है कि लोग जिसने रिक्वेस्ट की है वो वीडियो देखेंगे। एंड हाँ पाकिस्तान में भी 5G का कुछ भी नामो निशान नहीं 2020 या 21 तक, क्योंकि बहुत काम करना है यहाँ पे, टावर्स, फ़ोन्स एंड अलाउंस लेनी है। सो यही बात है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अभी 4G का, क्योंकि 4G बहुत ज़्यादा स्पीड देती है। USA में 5G स्पीड ज़्यादा देती है, तो इस वजह से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ यार 5G कितना सपोर्ट कर रही है। 86 गीगाहर्ट्ज़ तक जब जा रही है तो आप समझ सकते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग स्पीड है पाकिस्तान में 4G का इस टाइम पे। जोंग वालों का अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं 4G स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। जब 5G आएगा जोंग वालों का तो यार हम जब एक 2 GB की वीडियो आधे घंटे में वाईफाई पे अपलोड करते तो 2 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे, यही सोच रहा हूँ। आई थिंक 2 मिनट लगेंगे नहीं यार 5G के ऊपर वाईफाई के। तो 4G में मैक्सिमम 3-4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं एक 2 GB की वीडियो अपलोड करने में मैक्सिमम। सो यही बात होती है कि यार 5G 4G टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे जा रही है तो उससे हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सो ये कुछ गवर्नमेंट पार्टी जो है ना वो समझती नहीं है। सो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब के साथ ब्लैक आइकन को प्रेस कर सकते ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।